is vegetable stock. कैसे इसको यूज करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं? I get so many of these questions on my Instagram. Hi, this is Hina Gujral and welcome to my YouTube channel. तो आज हम बनाने वाले हैं easy vegetable stock. पूरा डिकोड करेंगे कैसे इसको बनाते हैं, क्या क्या चीजें इसमें डलती हैं एंड हाउ इट इज यूजफुल फॉर एवरीडे कुकिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वेजिटेबल स्टॉक की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है इज दैट यू कैन यूज ऑल द लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स सिटिंग इन द फ्रिज. यस, इट इज द बेस्ट वे. जो एक कैरेट बच गई है, एक मशरूम बच गई है और या थोड़ा सा अनियन बचा हुआ है, उस सब को यूज करने का बेस्ट तरीका है वेजिटेबल स्टॉक. तो आइए बनाते हैं इसको. So now for making vegetable stock, I am using some mushrooms, carrots. मैंने दो टाइप के carrots लिए हैं, this orange carrot and this red carrot. But whatever variety of carrot you have, you can use it. Then celery is also very important. It adds lot of flavor to your vegetable stock. Celery leaves, and then there is this important ingredient, very important, don't miss it out, is coriander leaves, not leaves, sorry, coriander stems. Okay, then we have some onion over here. Smashing the garlic. Now we are roughly chopping the garlic and it's ready. The best part of stock is you don't have to fine chop everything. You can just roughly dice the vegetables, so there is like minimal cutting chopping involved. So I'm adding celery leaves over here also for the extra flavor. Along with that, I'm adding a sprig of thyme. Thyme is a fresh herb, so ये market में बहुत easily you can get it. So I'm adding that for the flavor. So I'm adding clean filtered water, approximately 1000 ml of it. So I'm adding few whole spices over here for the flavor. Here is bay leaf, जिसको तेज पत्ता भी बोलते हैं. Then थोड़े से काली मिर्च के दाने. And then I am adding a cinnamon stick. And here goes our salt. Add it teeny bit. Do not add too much of salt. And now I'm going to put it on simmer. So now all you have to do is remove these vegetables. Since our stock is ready, जितना भी flavor है vegetables का वो stock में आ चुका है. So now we can remove them from the stock. So after making stock, lot of you ask what to do with these veggies. You can make a soup out of them, you can add them to khichdi, or you can mash them and make a puree and eat it. So there are so many ways to use these leftover vegetables. सो आई होप आपको ये इजी वेजिटेबल स्टॉक का वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड टेल मी इन द कमेंट्स कि इन फ्यूचर आप कौन सी हेल्दी रेसिपीज और देखना चाहते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे. थैंक यू सो मच. बाय बाय.